that. So somebody told me improv, you get instant feedback and instant rather than waiting for a theatre and all that. So I think that's what got me into looking for options for improv. I've heard about improv and I used to watch this series called Whose Line Is It Anyway? And I also read here and there. I have seen a lot of stand-up shows offline and online, and that's how I got to know about improv. So, again, initially I was introduced to improv through some leadership training. So I attended a couple, and then the entire training was based on the concept of improv. And then So when I was in college, I had taken a course in theatre. That's when it was one of the tactics to help us think, and I really enjoyed it back then, so I wanted to try it again. So your shoes remind me of a very important thing my dad said. He said, मुझे दौड़ना है, भागना है ना, बस रुकना नहीं है. So, and I justified. उस दिन के बाद से मैंने कभी रुकी नहीं. और मेरे से याद ही करता रह गया था. उसी स्कूल में पढ़ती है वो. और मैं यहाँ वेट करता हूँ. So I just justified whatever came. And I will drop the virtue on the floor. चलो एक और मर्डर करते हैं. दौड़ लेंगे उसके बाद. एक बार या दो. फिर मैंने उनसे मिलने के बाद सोचा हम दो हैं तो हम भी दो को मारते हैं. गाँव में अपना ही राज चलेगा. हाँ ये बात तो एकदम ठीक है. कब्जा कर लेते हैं. जल्दबाजी मत करो. Super excited, very nervous, but mostly very excited. A lot of butterflies in the stomach. But this is what improv is. I think the sessions have taught us. Yes, and today's the day. And just, you get so focused and zoned inside that you just forget the world. So that's the best thing. I feel excited and nervous both, but mostly excited because that's the beauty of improv. We'll go there and figure it out. So I'm super excited for it. Improv is fantastic. It's so much fun. I think we've gotten over so many inhibitions that we had earlier. Actually, both. I am nervous also, and I'm excited, and I think it'll be a lot of fun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1. Yeah! मम्मी क्या बना रही हो? कद्दू सब्जी बना रही हूँ बेटा. कद्दू सब्जी बहुत टेस्टी है. आज खा लेना. मम्मी इसी वजह से तो पापा आपको छोड़ के चले गए. उन्होंने कहा था कि दिस इज स्पार्टा और इसका कोई मतलब नहीं बनता था, इसीलिए मैं आपके साथ रुकी और उनके साथ. बेटा ये तरीका है. तुम्हारे पापा साथ में ये भी कहते थे. Last Christmas, I gave you my heart. Very next day, you gave it away. This is the reason why he left. मम्मी you gave it away. आपने चीट किया पापा. कद्दू की सब्जी नहीं खा रहे थे. क्या करती मैं? कद्दू बनाती हूँ, मेरा फेवरेट है. हमारी लखनऊ की स्टाइल है. खिलाना मुझे क्यों टॉर्चर करती हो? बॉयफ्रेंड बेटा ऐसे बात करते हैं. अंकल अंकल हेलो डार्लिंग. कैसे हो? कैसे हो?
मुझे कद्दू की सब्जी की स्मेल आ गई थी बाहर से, बहुत अच्छी लगती है। Oh my God. अंकल मुझे आपको कुछ कहना है, बस बहुत हो गया। तेरा मेरा रिश्ता जैसे अंडा भुर्जी और पाव। तो अंकल मुझे आप पहले अच्छे नहीं लगते थे, पर ये जब मुझे रियलाइज हुआ रात को सपने में, तो मैंने सोचा आप ही मेरे नेक्स्ट पापा हो। जवाब देने से पहले मेरी एक बात सुनिए। ये जरूरी नहीं कि हम जिससे प्यार करते हैं वो हमें भी प्यार करें। तुम्हारा IQ ना हमेशा से इतना छोटा। बस यार, मतलब हमेशा कितना लड़ाई करोगी यार, ऐसे होना होता है। IQ मतलब कितनी बेइज्जती करोगी यार, मतलब तुमने ना हर जगह मेरी नाक कटवा दी है। क्या नाक कटवा दी है? मतलब क्या नाक? नवीन तुम्हारे पीछे कुछ है। नवीन पीछे मत मुड़ो, तुम्हें दिखा? नवीन तुम्हें दिखा? तुम्हारे पीछे है। नवीन ये क्या है? उड़ रही है ये तो। तुम्हारे मेरे पास नवीन तुम मेरे पति हो, मुझे बचाओ। नहीं यार, मतलब देख लेंगे और हो जाएगी। गैंग्स ऑफ वासीपुर स्टाइल। नवीन उसका काटना पड़ेगा, उसे काटना पड़ेगा। ये तो भूतनी है। बाप का, बेटे का, पोते का, सबका बदला लूंगा मैं। काट देंगे। एकता कपूर स्टाइल। नवीन Incredible. The audience was so supportive and you just felt so comfortable. It was a lot of fun. Improv, I think it's something you take it back with you. I think you learn so many things in improv that is you need it in your day-to-day life and even at work and everywhere. And I hope I can continue doing improv at the next level. I feel super amazing. Like I was scared before, but the way it went, it was amazing, and I think I want to do more of this because it was an exhilarating experience. Awesome. I think the beauty of improv is in the spontaneity, and I feel like after going on stage, the fear is gone now, like the fear I had before. So I think that way it's really helpful. So I think improv is awesome. Oh, it was so good. We didn't make a fool of ourselves. People laughed. My husband laughed, my son laughed. So I was like, okay, maisa masool. And I thought it was a great show. We all did get our best sort of selves there. So we had fun. I think it's the most fun that you can have with your clothes on. Okay. I think Ankur is a fantastic mentor, and every Sunday we look forward to mornings coming over here. खून बढ़ जाता है, इतना हंसते हैं, and I plan to continue and meet him every Sunday morning with the gang and continue with improv. I think it's a fantastic thing he's introduced us to. Thank you. Thank you. Oh, it was so great to perform and to see that the audience is enjoying. I think that was the best part.